और डाउनलोड हो गया। यस मैम। ओके, तो अगर ऐसा कोई है ऑप्शन है तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। यस मैम, कर लेंगे। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास? यस मैम, ऑफ कोर्स मैम। Okay, so on the last turn, let me quickly see what we have done. रियल नंबर फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड आप लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। रेशनल के लिए किसी ने ट्राई किया या नहीं? ये है मैम। वो तो हो गया था ना? यस मैम। Rn over R हो चुका है। Cn over C कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये भी प्रूफ हो गया कि वेक्टर Yes, ma'am. स्पेस है। यस मैम। ओके, एक्सपोनेंशियल nth डिग्री पॉलिनोमियल, ओके, ये भी प्रूफ हो चुका है। यस मैम। ओके फाइन, इसी पे खत्म किया था हम लोगों ने। ओके, सो ये थर्ड वाला एग्जांपल तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं? व्हाट अबाउट दिस थर्ड एग्जांपल? नहीं है मैम। नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट नहीं मिल रहा था, राइट? वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था ना। Okay, after that we have seen that if we are taking up polynomials of degree less than or equal to n with real coefficient and field be scalars and define the vector addition and multiplication by this one, then this forms a vector space. Now the next one is, let V be a set of infinite sequences of real numbers of x1, x2, xn. Let the field of scalars be R and define the vector addition and scalar multiplication by this one. Whether this will form a vector space or not? Have anyone tried that? बताइए, किसी ने ट्राई किया था क्या? कुछ होमवर्क नहीं दिया था क्या हमने लास्ट क्लास में? नो मैम। Okay, so please try this one in your free time. We will go with this one, second last. इनफाइनाइट सीक्वेंस आप लोग ट्राई करेंगे ना, वेक्टर स्पेस है कि नहीं? कोशिश करेंगे मैम। ओके, अगर नहीं होता है तो शाम वाली क्लास में बताइएगा। Now let us see this one. Let V be the set of all continuous functions f from R to R and let the field of scalars be R and define the vector addition and scalar multiplication by f plus g is the continuous function defined by f plus g of x is equal to fx plus gx, and cf is the continuous function defined by c f of x is equal to c into f of x. So now we have to verify whether this is a vector space or not. आप लोग इसके साथ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या नहीं? मैम बुक्स में समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या पढ़े। नहीं, हाफमान कुंजी की बुक है ना, उससे उठा के आप लोग एटलीस्ट एग्जांपल्स और ज्यादा कर सकते हो ना। मूडल पे सजेस्ट की गई है ना बुक। इसमें बुक डाउनलोड एक दिन में ट्राई किए थे, समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप की है। आप लोग उसमें से एक्सरसाइज उठा के करना ट्राई करिए कि उसमें कई सारे एग्जांपल्स वेक्टर स्पेस के दिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे तो 6 और 7 ही लिखे हैं ना, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, वहां पे आपको और सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा आप लोग सॉम सीरीज की भी बुक ट्राई कर सकते हैं। Okay, so let us start this one. V is equal to collection of F, where F is what? F from R to R is continuous function. Continuous function क्या होता है? बताइए, किसी को नहीं याद? जो मैम पूरे लाइन पे कहीं ब्रेक ना हो। हम LHL इक्वल्स टू RHL जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। LHL is equal to RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यस यस मैम। तो ये तो लिमिट की एग्जिस्टेंस हो गई ना। कंटिन्यूअस ये कैसे? मैम जो पूरे डोमेन में कहीं पर ब्रेक ना हो। यस, दैट इज ट्रू, बट उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? इनफाइनाइट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, उस शेप में भी कहते हैं। इनफाइनाइट टाइप का मतलब? जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है R से R1 R2 R3 इस टाइप से मैम। मैम जहाँ पे ये कंटिन्यूअस हो एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन इफ ऐसा कुछ। लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों में क्या पढ़ा था मैथमेटिक्स में? प्रोबेबिलिटी। रियल का कोई पार्ट नहीं था, रियल एनालिसिस का? नो मैम। रियल एनालिसिस या फिर कैलकुलस? मैम कैलकुलस हम लोग क्लास में पढ़ लिए थे। किसमें? 12th में? ओनली एक क्लास का कांसेप्ट क्लियर कर लिए थे बस। अच्छा, एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, बहुत बढ़िया, तब तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा तो ठीक है, पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है फिर। I am defining only for R to R. Let F from R to R, this can be any domain, means either it can be closed interval AB, open interval AB, or any subset of R. So it will be better if I write some subset, otherwise it may possible that some of you may confuse. Let S be any subset of R and sorry, and F from S to R is a function. Then F is said to be continuous if limit x goes to C, f of x is equal to f of C, said to be continuous at point C. Let me specify me more clearly. At some point C in S, if limit x goes to C, f of x is equal to fc, or more precisely we may say that as in terms of left hand and right hand limit, limit x goes to C plus f of x is equal to limit x goes to C minus C plus C minus, तो आप लोग को पता है ना? यस मैम, राइट हैंड यस मैम। हाँ, प्लस रहता है तो राइट हैंड, माइनस रहता है तो लेफ्ट हैंड, है ना? f of x is equal to f of c means what? First the limit x goes to c, f of x exists, and this value should be equal to value of that function at that point.
then we call that this function f from S to R is continuous at a given point C. And when this happens for every C in S, then we call that this f is continuous at S. S पे continuous कब कहेंगे? If जब हम दोनों लिमिट करें और फंक्शन के बराबर हो। हाँ, पूरे डोमेन पे अगर होता है ये चीज होल्ड, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, देन वी कॉल दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और जब किसी एक पॉइंट पे होता है तो हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बोलते हैं। f is said to be continuous on S if limit x goes to C, f of x is equal to f of C for every C belonging to S. For example, if I define the function f of x is equal to x, identity function for x in R, whether this will be continuous? Yes. Yes, ma'am. Okay. What about f of x is equal to x upon x minus 1 for x in R? And 0 when x is equal to 1. इसके बारे में क्या बताएंगे आप लोग? ये कंटिन्यूअस है या नहीं? x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी कंटिन्यूस होगा। में x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, राइट? यस मैम। Third, let us see f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1 for x in R. Now, ये कंटिन्यूअस है या नहीं? Yes, ma'am. Continuous. Yes, ma'am. Continuous. x इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? No, ma'am, नहीं है। मैम 1 पे नहीं। नो मैम, x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफाइन ही नहीं है। नो मैम, कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पर दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू f of 1, राइट? ऐसे केस में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? लिमिट x गोज टू 1, f of x कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके हमें बताइए तो। नॉट डिफाइंड। नो, लिमिट x गोज टू 1, f of x कितना आ रहा है? 2 आएगा। 2 2 आएगा, आ रहा है, राइट? 2 आ रहा है। बट दिस इज नॉट इक्वल टू f of 1 क्योंकि f of 1 डिफाइन नहीं है इस पे। So this type of discontinuity is known as removable discontinuity. Removable discontinuity means what? At this type of discontinuity, we may redefine our function in such a way that the function becomes continuous. So if I define f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1 for x minus 1, एक के अलावा ये सारे इस पे डिफाइन है, और जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये हम इसे डिफाइन कर देते हैं 2 फॉर x इज इक्वल टू 1. नाउ इज दिस कंटिन्यूअस? यस मैम। So removable Yes, ma'am. discontinuity means by redefining the function we may remove the discontinuity.
And another example is f of x is equal to, जहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना है ऐसे कोई फंक्शन बताइए। x is equal to 1 for x greater equal 0 and minus 1 for x less than 0. What about this function? ये continuous है? नो मैम, नो नहीं मैम। कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है? मैम, -1 से 0 RHL इक्वल नहीं है, -1 जो to 1 0 x is equal नहीं, to 0 पे -1 से डिसकंटिन्यूटी 1 है। यस, x is equal to 0 पे कहीं जीरो पे इसका डिसकंटिन्यूटी। नेचर चेंज हो जा रहा है। हाँ, लिमिट x गोज टू 0, f ऑफ x क्या होगा? एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट। इसका तो वैल्यू 1 आएगा ना मैम। लिमिट x गोज टू 0 पे f(x) की वैल्यू 1 आएगी, क्यों? नो मैम, नॉट दोनों एग्जिस्ट। केस में दोनों डिफरेंट आएंगे। दोनों केस में दोनों डिफरेंट मैम, आएंगे। LHL में 1 आएगा और RHL में -1, तो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो कंटिन्यूस नहीं होगा। Okay, that means what? Limit x goes to 0 minus f of x is equal to what? -1, क्योंकि x नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 है। And limit x goes to 0 plus f of x is equal to 1, right? क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा 1 पॉइंट है और ये हमारा -1 पॉइंट है। 0 -1 और ये है 0 1। तो this side function is here and this side the function is here. So at 0, whenever we are taking limit x goes to 0, that means we are reaching from here from left, right ना? 0 पे हम यहाँ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना? यस मैम। So whenever we are approaching from left, what we are finding, our left limit exists, but the value is -1. And whenever we are approaching from right side, means positive terms, we are seeing our value is existing at 0, but limit x goes to 0 plus is equal to f of x is equal to 1. Right? यहाँ पे 1 आ रहा है ना, ये 0 है, इसको आप लोग माइनस मत कंसीडर करिएगा। लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो आता है ना सबको? यस मैम। यस मैम। Okay. So whenever this case happen, the left limit exists and the right limit also exists, but the whole limit does not exist. This type of discontinuity is known as jump discontinuity, because this have jump, no? Whenever we are going with 0 minus, we are taking -1, but whenever we are going from 0 plus, we are taking +1. So at 0 there is a jump from -1 to +1. Am I right? यस मैम। यस मैम। So this type of discontinuity is known as jump discontinuity. Okay, so now we will come back to our vector space example. Okay, before that, if you are not aware with continuous functions, then probably you are not also aware with properties of continuous function. The first property of continuous function says that
If f and g are two continuous functions, then f plus minus g is also continuous. This one is our first property. And now second property says that what? F into G is continuous. फंक्शंस का प्रोडक्ट भी डिफाइन होता है, इस बात से आप लोग अवेयर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Like how if I am defining fg of x means what? इसकी अगर हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? fx into gx. Right, f of x into g of x. F by g is continuous provided g of x is not equal to 0 for any x on the domain. Okay, and fourth property of it says that c into f is continuous for any c in R. So whenever f and g are two continuous functions, their sum as well as minus will be continuous, their product will be continuous, their division is continuous provided g does not take any value 0. And the last one says that what? If we multiply any scalar in the continuous function, the new function will again be continuous at whole domain where f is defined. Clear? Okay, now Yes, we ma'am. will come. Clear. Now we will come back to our given example. That V is given what? Collection of F from R to R such that F is continuous. F is set of real numbers. Field is real number. F plus G of X is defined how? F of X plus G of X. This is defined how vector addition, and the scalar multiplication is defined as C f of x is equal to C into f of x for C belonging to R, a real f. Now, first thing is what? We have a non-empty vector space, non-empty set V. Addition and scalar multiplication is defined here. Field is given here. So what we have to verify? Whether V over R with respect to these operation is a vector space or not. Let us verify one by one. First property of vector space says what? बताइए, वेक्टर स्पेस तो आप लोगों ने पढ़ा था ना? Associativity. Associativity. Okay. So if I am taking three functions, let F, G, H be three members of V and C1, C2 are two members of R. Now, if I am defining the function f plus g plus h, then whether this will be continuous?
Yes, ma'am. This will be continuous. Why? Because it is the property of continuous functions. Then when f and g are continuous, then f plus g is continuous. Then again we will treat this one as one function, and then we are adding one continuous function in another continuous function. So both of three are continuous. So f plus g plus h will also go to v. Yes. And if this goes to v, what by definition what this will be? By definition of vector addition, f plus g of x plus h of x, right? Yes. है ना? Okay. Now again by applying definition on the first term, what we will obtain? F plus g of x will be what? F of x plus g of x plus h of x. Now since these all are functions from R to R, so fx, gx, hx will all are real numbers. So we also know that associative property holds for real number. By applying associative property of real numbers, can I write this as f of x plus g of x plus h of x? Can I do this? Because each of them is a real Yes. number. Right? We can do that. If we can do that, then can I write this one as f of x plus g plus h of x? And again by utilizing the definition, I can also write it as f plus g plus h of x. Right? We can do that. So this implies what? Whatever will be the value of x, this holds for every x. So what we can write this as f plus g plus h is equal to f plus g plus h. That is associativity property hold. Am I right? Yes, sir. दो फंक्शंस को हम इक्वल कब लिखते हैं? f इज इक्वल टू g का क्या मतलब होता है? f इज इक्वल टू g का मतलब होता है ये दो फंक्शंस हर एक पॉइंट पे जहां ये डिफाइंड है इक्वल वैल्यू ले रही है. मींस f of x इज इक्वल टू g of x फॉर एवरी x. यहाँ पे हम लोगों ने x को आर्बिट्रेरी लेके प्रूव किया है ना. That's why from this I concluded that f plus g plus h is equal to f plus g plus h. Now can you do commutativity for the same? If I am taking f plus g of x will be what? F of x plus g of x. f of x plus g of x. And now fx and gx are real numbers, so they are commutative. If they are commutative, can I write this as g of x plus f of x? Yes, ma'am. Of course. Yes, ma'am. If I can write this, now by definition this becomes what? G plus h of x. Right? So if f and g are two continuous functions, then मैम f g plus plus f मैम g plus of f of x होगा. okay, sorry, h लिख दिया हमने. If f and g are two continuous functions, then f plus g is equal to g plus f, right? That means what? Commutativity Oh, holds. Next property क्या है? वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई करनी होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ना.
identity element of vector addition, or we may say zero vector. So before that, if I am defining a function 0, or let me call more precisely f of 0, ताकि आप 0 से कंफ्यूज ना हो, या फिर हम 0 को एज अ फंक्शन ले, आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No. 0 bar from R to R is a function defined by 0 bar of x is equal to 0. This one is real number 0 for every x in R. First tell me whether this will be a continuous function. Yes, ma'am. This will be a continuous function. So this will be a member of V. Yes, ma'am. So this says what? There exists 0 bar in V such that f plus 0 bar of x is what? This will be f of x plus 0 bar of x, and 0 bar of x is defined as 0, so it will become f of x plus 0, and this is equal to f of x for every x. So this implies what? F plus 0 plus is equal to f, and this implies that 0 vector exists, right? Yes. Now fourth property is what? Minus of v. Inverse vector है ना? Inverse element of vector addition exists. That means what? For every v in V, there exists an element minus v in V called the additive inverse of v, such that v plus minus v is equal to 0. So if f from R to R is a continuous function, then what about minus f? First tell me whether this will be a function from R to R. बताइए, अगर f आपका फंक्शन है R से R पे, तो माइनस ऑफ f फंक्शन होगा आपका R से R पे? यस मैम। Yes, ma'am. Right? और अगर f कंटिन्यूअस हुआ तो क्या माइनस f कंटिन्यूअस होगा? Yes, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. नो मैम। क्यों नहीं होगा ये कंटिन्यूअस? या फिर क्यों होगा कंटिन्यूअस? Think about it and answer me. Because मैम 0 वेक्टर में माइनस f जोड़ देंगे तो वो प्रॉपर्टी से हो जाएगा. मैम नहीं, ए प्लस इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना? नहीं, उसके पहले a प्लस ए इनवर्स 0 होगा, वो अलग बात है. अभी बस हम ये पूछ रहे हैं कि अगर f हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो माइनस f कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं? अभी हम मैम इसके लिए ये होगा मैम. क्यों मैम होगा? ये होगा क्योंकि f यदि कंटिन्यूअस है अपने डोमेन पे, उसी का तो ये क्या बोलते हैं, इमेज है ना, इनवर्स इमेज है, तो ये भी रिफ्लेक्शन, कॉन्टिन्यूअस होना, रिफ्लेक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए या होगा या फिर है? होगा मैम, होगा, है। Right? This we can also verify from this fact that for every c in R, c into f is a continuous function whenever f is a continuous function. c is equal to -1 अगर हम रख लें तो ये माइनस f बन जाएगा ना. If I take c is equal to -1, can I write this as -f? Yes, ma'am. Yes. So by the property of scalar, by the property of constant multiplication, we can also conclude that any constant multiple of a continuous function is a continuous function. तो ये एक constant multiple ही तो है. Yes, ma'am. So if this is continuous, this implies that minus f from R to R is also continuous, and therefore
this minus f belongs to v, right? अगर ये कंटिन्यूअस हो गया, r से r पे फंक्शन है तो v में चला जाएगा ना. Yes, ma'am. Now what about f plus minus f of x? This will be what? F of x plus minus f of x. This will becomes f of x minus f of x, and that is equal to 0 for every x. If this is 0 for every x, can I write this as 0 bar of x? Yes, ma'am. If I can write this from here, can I conclude that there exists for any f in V, there exists minus f in V such that f plus minus of f is equal to 0 bar, and this 0 bar is what? Our 0 vector, our identity vector. So this implies what? Inverse of, क्या कहते हैं इसे? Additive inverse. Additive inverse. Right. Additive inverse property hold. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पांचवी. कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना, over filled multiplication. AB into V is equal to AB into V. So we have taken C1, C2. Here we have taken C1, C2, two members of R, because here our field is R, and FGH we have taken members of V. So if F belongs to V, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो मेंबर हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्या वो V में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो V का मेंबर होगा या नहीं. सो इफ आई एम टेकिंग F इन V, फ्रॉम दिस कैन आई कंक्लूड दैट C1F belongs to V? यस मैम. क्यों? क्योंकि फिर से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. ये मल्टीपल है. हाँ, स्केलर हाँ मल्टीपल बोल सकते हैं या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, राइट? तो ये इसमें जाएगा फॉर एवरी C1 इन R. व्हाट अबाउट C2 C1 ऑफ F? क्या ये V में जाएगा? Yes, ma'am. This will also go to V for every C2 in R. So if this is a member of our V, then C2 C1 F of X is what? This will be what? By definition of scalar multiplication, C2 into C1 F of X. And again we will apply the definition on this, and what we will obtain, this will become C2 C1 F of X. And now C2 is a real number, C1 is a real number, F of X is a real number. We also know that the real number multiplications are associative. So can I write this one as C2 C1 of F? लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes. Again, I can write this as C2 C1 multiplication F whole of X by definition of by the given scalar multiplication definition. ये दिया है ना, C of F of X is equal to C into F of X. अगर हमारे पास कहीं C into F of X आए तो हम उसी CF of X तो लिख ही सकते हैं ना.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes. by following this, can we say that C2 C1 of F is equal to C2 C1 of F, right? And this implies that scalar multiplication is compatible with फील्ड मल्टीप्लीकेशन ना C1 C2 फील्ड के मेंबर थे ना इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी हमें देखनी है छठी प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Multiplicative identity. ओके so if one what is the multiplicative identity of F if F is equal to R with respect to usual addition and usual multiplication रियल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है 1 मैम 1 so there not there exist for for 1 in R whether 1 into F will be what 1 into F of X is equal to 1 तो एक स्केलर है ना so this will become 1 into F of X अब 1 real number fx real number so this will become what f of x from this can I conclude that 1 into f is equal to f for every f in B बताइए Yes, ma'am. Yes, ma'am. so this shows what इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं अच्छा इसका कोई अलग से नाम नहीं है so this one also hold now seventh one is what distributive property for distributive property C1 F प्लस G अगर F और G आपका V में है C1 कोई एक रियल नंबर है तो C1 इंटू F प्लस G ये V में जाएगा क्या Yes, ma'am. जाएगा क्यों क्योंकि पहले तो हम लोग का दो वेक्टर का दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सम है वो कंटिन्यूअस होता है और अगेन हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का स्केलर मल्टीपल भी कंटिन्यूअस होता है अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है so whenever this fg belongs to V and C1 is any real number then C1 into F plus G belongs to V now what will be its value C1 F plus G of X this will be what by definition this will be C1 into F plus G of X correct यही होगा ना Yes, ma'am. now this will become what C1 into F of X plus G of X right and now all of them are real numbers C1 is a real number Fx is a real number Gx is a real number we also know that usual multiplication is distributive over usual addition in R so by applying this property can I say that this will be equal to C1 F of X plus C1 G of X कह सकते हैं Yes, ma'am. and also we can write this one as C1 F plus C1 G of X
लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. So this implies what? C1F plus G is equal to C1F plus C1G. So first distributive property hold. For the second one, let us again see what is there. If we have C1 plus C2 of F, अगर F कंटिन्यूअस फंक्शन है, C1 C2 रियल नंबर्स हैं, तो C1 plus C2 into F क्या ये V में जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाएगा. And by definition, what its value will be? C1 plus C2 F of X. This will be equal to C1 plus C2 into F of X. Again, by utilizing the property of distributive property of real numbers from multiplication to addition, we can write this one as C1 F of X plus C2 F of X, and this will be equal to C1F plus C2F of X. So this implies what? C1 plus C2 of F is equal to C1F plus C2F. So all the 8 properties which are required to be a vector space are satisfied. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So from here now we can conclude that given set V over R with respect to given addition and multiplication is a vector space. आप लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? No, ma'am. Ma'am, this is a Yeah. Yes, yes. Okay. मैम केवल So, ये चीज नहीं समझ आ रहा कि इसकी जरूरत पड़ेगी. क्या नहीं समझ आ रहा? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. वेक्टर स्पेस है मैम, इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी ये नहीं समझ पा रहे हैं बस. अच्छा, वेक्टर स्पेस की जरूरत कहाँ पड़ेगी? देखिए, जैसे हम लोग जब इसके बाद पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. लाइक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं बेसिकली फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस. और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे ये सिस्टम सॉल्वेबिलिटी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स, राइट? तो लीनियर सिस्टम जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी. ax इज इक्वल टू बी को ही लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं ना. तो ये Yes. ए जो मैट्रिक्स आती है वो कहाँ से आती है? बेसिकली ये एक मैट्रिक्स क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ये जो मैट्रिक्स डिफाइन होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. हम लोग क्लास में देखेंगे भी कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग को वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि पहले हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस पे जाएंगे सिस्टम सॉल्वेबिलिटी पे. जैसे ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग अपनी कॉमन लाइफ में देखते आते हैं, मतलब यूटिलाइज भी तो करते आ रहे हैं ना. कभी भी रियल नंबर्स के सेट में हम लोग ऐसे वेरीफाई नहीं करने जाते थे, डायरेक्टली अप्लाई करते थे अभी तक, है ना. कहीं 2+3 है तो हम लोग डायरेक्टली बोलते थे 3+2 इज ऑल्सो 2+3. बट अभी तक क्या होता था, हम लोग किसी भी चीज के लिए एक रिगरस मैथमेटिकल अप्रोच नहीं फॉलो करते थे. Now because you people are going to be a graduate in mathematics, so it's your requirement, we can say that you should know what are the formal proofs for that, how this happens, why the things like that. That's why what we can say that whatever we are till date applying it directly, we are learning now rigorously why the things are happening. Clear? Yes, ma'am. Okay.
मैम हाँ, मैम जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी उसमें आपने क्या यूनियन का साइन यूज किया था, V/R ना? V/R था, हाँ, ओके मैम। यूनियन नहीं है ये। V के लिए हमें एक फील्ड चाहिए होती है ना, इस फील्ड को लिखा Yes, था, वो थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ है उसकी वजह से हो गई। V/R। मैम कभी कभी x और n में डिफरेंस नहीं पता चल पाता है यस मैम, जो आप दैट क्रिएट Yes, ma'am. एम्बिगुअस। ओके, उसका हम ध्यान रखेंगे जब वो आएगा तो। अभी तो पूरा बस x यूज हो रहा है, n तब हम यूज करेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, या फिर हाँ यहाँ पे जब हम जाएंगे, या फिर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स देंगे। अगर कहीं भी डाउट हो हैंड राइटिंग में तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं तुरंत, या बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। नहीं मैम, हम तो मैम एक्स ही मान रहे हैं शुरू से, इसलिए हमको दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, अभी के लिए ये x ही है। So if from this we have concluded that the collection of all continuous functions over real numbers forms a form a vector space. Now the last example says that let V be the set of all functions f from R to R that satisfy the equation f double dash is equal to minus of f, and let the field of scalars be R. Define your vector addition and scalar multiplication in the same way as in the previous example, means this one, and verify whether this is a vector space or not. Will you do that example? आप लोग ट्राई Yes, करेंगे ma'am. ना? We will जैसे try. राइट, इसके लिए हम हिंट दे देते हैं आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि f अगर R से R में कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये f प्लस जी c इंटू एफ, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होंगी या नहीं, यहाँ आपको चेक करना होगा कि f जो फंक्शन जा रहा है v में वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स व्हाट, पहले तो f 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और आपको कुछ प्रॉपर्टीज अगेन, जैसे यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की, द सेम थिंग हैपेंस विद डेरिवेटिव आल्सो, कि अगर f और g दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो f प्लस माइनस g भी डिफरेंशिएबल होता है, f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होता है, f बाई g भी डिफरेंशिएबल होता है, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x, और उसका स्केलर मल्टीपल भी डिफरेंशिएबल होता है। इस बात से तो आप लोग अवेयर है ना? Yes, ma'am. Properties of differentiable functions. So by यस utilizing मैम। those property, you need to verify whether the last one is a vector space or not. So for today, you have two homeworks. This one, that set of infinite sequences is a vector space, and this last one, that set of functions which satisfy f double dash is equal to minus of f is a vector space. Before coming to the next class, means in evening, please try that, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर हम लोग शाम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। Thank you. Okay, So, thank we'll you. stop the class here. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you.